Vehicle number 0678 is on a tea trail from the Meridian with a stopover at the Mittal Tea House and then moving on to Shahar-e-Shahjahanabad to at the Kailash Chand Jain tea shop for a Kullarwali chai topped with almonds and saffron, and making its way into the heart of New Delhi at the Gold Market at the Naveen Tea Stall. Welcome to bus number 0678, which has taken you today on the trail at Delhi Meridian, onward backwards with Robinson on the tea trail. How do you create a beverage? Because in India we had no beverage or a common beverage before tea was there. Different parts of India would use buttermilk, chach, lassi, anything a derivative of milk would be used and served for people whom you loved, and also when travelers traveled between various places. The Europeans and particularly the English loved Indian tea. It was more strong as compared to tea that they were getting as part of the Chinese trade. Very interesting is normally cash crops are always going out of the city, but tea is consumed, 70% of India's tea production is consumed in India itself. So we export very less of tea out of India. So the first stop for tea is Mittal's Tea, which is located in Subhash Nagar, and इनके पास इतनी वैरायटी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो from all the price range that you can imagine. And इनके पास almost सारी type की teas थी जो exist कर सकती थी, and we also got to try some of the interesting teas. So जो owner है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा interaction हुई regarding tea, how it's made and कितने variety की होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है. Tell our audience, first thing is that this is the most simplest of foods or beverages that we can imagine. Why? You just need some dried leaves, hot water, and whatever the water extracts is tea, something that you make. So there are two things. A, this makes it the most affordable beverage in the world, and B, also whatever the water absorbs or whatever the water sort of takes in, that's also very easy for the body to absorb all those ingredients. So in India, the tea story began somewhere here, just on the fringe, the border area of Assam, and this is like we know just 200 years ago. But almost 2000 years or more ago, China had discovered tea, and guess where it was? Barely 500 to 800 miles away from here. This is somewhere in Yunnan. It's not on the map. It's Yunnan province. And what that tells us is that this is, as God wanted, was the birthplace of the tea plant. There are just two species of tea plant known to mankind. The first one was discovered in Yunnan in China. The second one in Assam, Nagaland area in India. Until date, there is no third variety. All varieties that you see anywhere else are kind of hybrid. Now that we have the map in front of us, we quickly talk about the tea growing areas. Assam, the birthplace of tea, is the largest. There's a small area, Darjeeling, but somehow it has, caught the imagination of poets, of critics, because of the complex flavor that it gives to tea, this beverage. Then we just moved south. We have these hills of Tamil Nadu, Nilgiris. In fact, we have in this shop the first batch of this year from Nilgiris, which is just harvested about 2 weeks ago. We'll try to make you try some. And then we move north. Himachal Pradesh. This is the region like close to Delhi, Kangra, Palampur as we call it. Here's another area where tea is found, tea is grown. Have a habit, you get up in the morning, you want to have a cup of tea. You may have your own favorites, strong, dark, light. In India, we somehow want milk also to be introduced in tea, because milk has a flavor of its own. Plus, if there's anything which is very, very sort of harsh in the tea, milk just helps to reduce it. So we first smelled the Nilgiri tea, and I have to say काफ़ी एक mild सा इनका fragrance था, एंड जिस तरीके से इस नीलगिरी टी को बनाया गया है एंड जब वो मैंने ट्राई करा, सो आई हैव टू से काफ़ी ज़्यादा लाइट है एंड डेफिनेटली आई एम नॉट अ टी पर्सन, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड डेफिनेटली मैं इसको ऑन माय डेली लाइफस्टाइल में इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी. यहाँ की तो चाय ट्राई कर ली है एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुरानी दिल्ली टू ट्राई सम
पुरानी चाय। एंड यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं कैलाश चंद चाय वाले की चाय, जो कि काफ़ी ज़्यादा साल पुरानी है। हमने पूछा था कितने साल पुरानी है, तो दे सेड कि हम 98 ईयर्स ओल्ड हैं, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है फॉर अ टी शॉप। एंड इसके बाद यहाँ पे ये किसी टाइप का अपना एक मसाला डाल रहे हैं, जिसकी रेसिपी ऑफ कोर्स ये नहीं बता रहे हैं। एंड इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारा दिल खोल के चाय पत्ती डाली है और इसको ये काफ़ी अच्छे से अब बॉईल कर रहे हैं। एंड एज़ यू कैन सी कि ये काफ़ी अच्छे से इसको उबाले लगवा रहे हैं। जो इनकी चाय मैंने ट्राई करी थी उसके अंदर खूब सारा बादाम दिल खोल के डाला हुआ था और उसी के साथ थोड़ा सा केसर। इस चाय को इन्होंने सर्व करी है कुल्हड़ के अंदर। एंड इसको डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा ठंडी हो गई थी बिकॉज हम शूट कर रहे थे। एंड एज यू कैन सी कि काफ़ी सारे चाय के कप है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ तो इसमें ना बादाम इतने ज़्यादा ओवरलोडेड डले हुए थे कि बादाम का ही मुझे टेस्ट आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा ही दूध वाली चाय, तो ये मुझे ओकेश लगी, बट डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। अब चांदनी चौक से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे एंड दैट इज़ नवीन टी स्टॉल विच इज़ इन गोल मार्केट। एंड आई फील दैट ये जो प्लेस है ना अपने चाय के लिए तो ऑफकोर्स फेमस है ही है, बट उसके अलावा इनका जो बन मस्का है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लग रहा है मेरे को। इनके जो बन्स हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट है एंड जो बटर है वो तो दिल खोल के इन्होंने लगाया है। मैंने जब इसको टेस्ट करा था आई हैव टू से कि मुझे पूरा बटर बटर कर तो टेस्ट आ ही रहा था। एंड जो सॉफ्टनेस थी ब्रेड की वो भी काफ़ी ज़्यादा थी एंड जो मेरा हाथ था वो भी पूरा बटर बटर हो गया था। इसके अलावा अगर मैं इनके चाय की बात करूँ तो जो नॉर्मल चाय होती है बिल्कुल वैसा ही था। इनफैक्ट जो इनकी चाय पत्ती थी वो मुझे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में लगी एंड दूध काफ़ी ज़्यादा कम। सो ये मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से काफ़ी कम पसंद आई एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस जहाँ पे आज मैंने टी ट्राई करी है। ओवरऑल मुझे ये चाय ट्रेल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज़ मैंने काफ़ी डिफरेंट वैरायटी की टी ट्राई करी, अपने कंफर्ट जोन के बाहर गई एंड डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करके एंड आप सभी के साथ शेयर करके। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा एंड इफ़ यू लाइक इट देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो। सो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।